तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड। और भाई आज के एपिसोड में होने वाला है धमाल, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से हजारों साल पीछे, वो भी एसी ऑडिसी में। और आज के एपिसोड में फाइनली हम मिलने जा रहे हैं द कल्ट ऑफ कोस्मोस से। फाइनली वो दिन आ चुका है कि हम कल्ट ऑफ कोस्मोस से आमने सामने ही बात करें और देखें ये लोग बंदे कौन है और क्या चाहते हैं मुझसे, और क्यों पीछे पड़े हैं मेरी फैमिली के, मतलब मेरे फादर की और मेरी मदर के भी, और वो फादर भी जो जिनको मैं नहीं जानता ऊपर, पता नहीं। सारी स्टोरीज के राज अब खुलने को तैयार है, सो लेट्स गो। लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद ही होगा, हमने एक खतरनाक लेजेंडरी एनिमल को मारा था भाई। लेजेंडरी एनिमल मतलब सबसे हाई लेवल वाला लेजेंडरी एनिमल था, तो मारते भाई मैं एक बार मर भी गया भाई। खतरनाक बैटल थी, पर एक बार मैं मर भी गया, और पर लिटरली में भाई वो खतरनाक बैटल थी। तो लेट्स गो लास्ट टाइम। और भाई हमें काफ़ी अच्छे वेपन्स भी मिले उस एनिमल को मारने के बाद। दूसरी काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हमें दिखाई। तो वैसे ही चीज़ हम करने वाले हैं, वो सब हम करेंगे जो करना है हमें। देखते हैं। पहले तो ये लॉन्ग वेपन्स आर बेस्ट। रह गया लो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ नज़दीक में ही था, तो ठीक है चलते हैं हेराडोट से बात करते हैं। हेराडोट से कि भाई ये चाहता क्या है, और क्या है भाई, ये भी कौन है भाई, और इसको इतना इंफॉर्मेशन कैसे पता है। ये So बंदा this है, is the secret chamber. ये ही है चैम्बर, सीक्रेट चैम्बर, और वहाँ तक का रास्ता। So, this is it. Hidden chamber of the cultists. Here, all along. I'm going inside. Keep my clothes for me? Best not to go in with your weapons, either. I don't think they'll look too kindly on that. How हाँ, do I look? Terrifying. Good. Find me once you've found out the truth in there. Keep your wits about you. Try not to do anything rash. Me? Rash? ओके, सही कहा, ज़्यादा उतावली मत होना है, सही कहा भाई, मुंह पे ही। भाई कपड़े तो मस्त है कल्ट ऑफ कॉस्मोस से, पर कुछ खतरनाक आर्मर टाइप Thought होता these ना तो मज़ा आता। ridiculous costumes were a good idea. देखा कॉस्ट्यूम अच्छी है, पर इतनी भी खराब नहीं है। इसमें मैं दिखाऊँ आप लोगों को, आर्मर कितना होगा यार इसका। डैम अनअवेलेबल, जीरो आर्मर लो। मैं आर्मर ही नहीं पहना, ये बस कपड़े ही चेंज किए मैंने, कोई बात नहीं। You're late! Very late! It's a good thing Demos hasn't arrived yet. Sorry, it's my first time. A new recruit? Welcome, welcome! वो आर दिस पीपल भाई, ये आई मैं आया और भड़कने लगी भाई ये कि भाई तुम काफ़ी There's a ज़्यादा lot लेट of हो people चुकी हो। here. All share our common mind. Good. We're here to evaluate the strides taken by the cult since the last meeting. We haven't met for some time. डैम वो चीज़। Where did they come from? The land and across the seas, we assemble as a community. Here, there is no war. There are no sides. ओके, अच्छी बात है। तो भाई यहाँ आते ही इसने भड़क दी कि भाई तुम काफ़ी ज़्यादा पहले लेट हो चुकी हो। अच्छा है कि अभी तक ये डीमोस आया नहीं है, वरना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती। और इसने कहा मैं भाई अभी तक का मेरा फर्स्ट ट्राई है, और इसने कहा न्यू रिक्रूट, अच्छी बात है। फिर ये लोगों से हमने पूछा कि ये लोग सब कौन है, तो भाई ये अलग अलग ट्राइब के बंदे हैं, मतलब कुछ स्पार्टन्स है, कुछ और भी मर्सनरीज है नॉर्मल है, और कुछ आप समझ सकते हो अथेनियंस है, पर्शियंस है, वैसे ही है। पर दूर दूर जगह से सब आते हैं सिर्फ यहाँ पे वॉर के लिए नहीं, बस मीटिंग के लिए। और काफ़ी टाइम बाद इनकी मीटिंग हुई। अब ये डीमोस कौन है पूछते हैं। You mentioned someone. Vimos. Who is that? You'll learn his name very quickly.
He's our leader. I'm sure he believes that, but no. He's our weapon. He's difficult, but he does important work for us. I don't envy his position one bit. ओके डीमोस यहाँ का लीडर होगा, पर नहीं, ये लीडर नहीं है। डीमोस ये कोई एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। डैम। I'll go talk to the others. Thank you. Yes, yes, before Demos comes. Who knows if you'll get a word in after that. ओके भाई, सब लोग ये डीमोस को काफी मानते हैं। व्हाट आर द कल्ट प्लान, ये हमें सुनना होगा। All right then, highest bidder. You're not listening. I'm still not convinced. You. We need another opinion on this. Why split resources searching for a woman we can't find? If we narrow our focus, Athens will be ours. Immediate threats have to be destroyed. Pericles has to be destroyed. Not without the mother. We aren't strong enough without the mother. Don't let Demos hear that. If anything, we should be hunting the father. We know who the mother is. Looking for the father would be a waste of resources. What do you think? Hunt the champion's mother or his father? The mother, the father. चैंपियन का फादर इन लोगों को पता नहीं है डीमोस का। उनका प्लान बना रहे हैं कि भाई हमें पेरिक्लीज पे अटैक करना स्टार्ट करना होगा। हम ऐसे रेस तो अपने ख़राब नहीं कर सकते जो है ही नहीं उसे ढूंढने में। तो मदर को मदर के बारे में इन्हें पता है, पर फादर के बारे में नहीं, तो मदर ही मैं बोलता हूँ। The mother. She's right. Get your priorities straight. Before you know it, Pericles will shore up his defenses and we will have lost our chance. Now, if you'll excuse me. I I'll hear need much you more information perfectly to well. identify You're who these just cultists wrong. are. We need to look for the father now. We can't have two minds about this. The cult must decide. उस तरफ चलते हैं भाई। अब ये लोग हंटिंग कर रहे हैं डीमोस की ब्लड लाइन, मतलब उनके मदर फादर पूरी फैमिली को करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे क्या गलत हो रहा है? Pull yourself together, Malaka. You're a fucking pig before slaughter. I'll do it, I swear. I'll kill him. Let me go. You like to watch, you sick fuck? You're not just going to watch. You're going to teach this little insolent shit a lesson. I want to do it. I don't want to. Does he deserve it? Does it fucking matter, does it? What I say goes. No questions asked. I couldn't do it. But I'm not scared. Not anymore. If you can't kill a fucking artist, what are you gonna do when I tell you to kill a fucking Archon? I will. I'll kill Phidias. TBS को मारना चाहता है। कौन है भाई, देखेंगे। I don't know. Show him what happens to cowards. They get fucking burned. You do it. I want to it. No. He's yours. You don't know what the fuck fun is. More for me. Fuck with me, and there's plenty more where that came from. हाँ भाई, वैसे सारे कल्टिस्ट को तो मैं मार ही दूंगा। Fuck up like that again and I'll draw blood. Now get the fuck out of here before I get this traitor's blood on your robes. You! Someone was spotted going into your house. God. What else do you want from me? Why मतलब they घूम रहा था, मिल गया ये। so sad. Like the tragic mask of Melpomene. Your family is safe for now. Just don't touch them. Don't hurt them. That is up to you. But I know you'll behave because you know their fates if you don't. Please, don't.
We will kill them. Your wife, your child. And then what would you have to live for? Nothing. Exactly. हाँ सही बात है। अगर कल्टिस्ट पूरी फैमिली को ही तबाह कर देंगे तो बाद में कुछ बचेगा ही नहीं इसको, तो ऐसे करना ही होगा। सॉरी, मैं गलत जगह पे घुस गया। अब ये कौन है? अब ये अपना चढ़ा रहे It's हैं। only blood right now, but who knows? Deimos may ask for our hands next. ओके, डीमोस ब्लड चाहता है सबका। Go on. Make your offering. मुझे करनी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि भाई इनको लगेगा नहीं करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। We just have to keep our sights on what the bloodline will do for us. The bloodline? The mother, the father, the sister. You know, his kin. We need them. All of them. To use them. That information is not for Deimos, of course. You know how volatile he is. He could rip through us easily. I'll be sure to keep it to myself. As you should. Nor can he know we're about to capture his mother. And do what with her? I would lower my voice if I were you. Just know she will be put to good use, unless she's uncontrollable. You know where she is? No, but it won't be long until we do, I assure you. She's the cult's next target. ओके, इसकी मदर कहाँ है वो नहीं, पर कल्ट के उसके टारगेट है रिमोव के और उसका यूज़ करने वाले वेपन की तरह। Tell me about Deimos. He's shown us what we need to know. He's a machine, a weapon for the cult. Someone that unstable can't be trusted with such personal information. Okay. I have to go. To our great ambition. To ambition. अब इस तरफ भी चल ही लेते हैं, क्या है देखते। भाई ये लोगों का प्लान पूरी तरह से डीमोस एक ऐसा ताकतवर बंदा है जो आराम से इन लोगों को मार सकता है, ये कितने भी ताकतवर सोल्जर क्यों ना हो। ये की चीज़ स्टील करनी पड़ेगी। Letters to and from the cult. Gods, they have a foothold in every part of the Greek world. We're in more danger than I thought. It's strange. I feel something. Towards the pyramid. It's covered in shards like alpinos. सच में भाई वो कार्ड में है अलग अलग छोटे पीस है, जो हमें ट्रायंगल शेप का मिला वैसे ही ये है। एक मिसिंग है जो मेरे पास है। Ah, you had the last piece. Now it is ready. Every time I see it, it calls to me and sings of power. Does it call to you like it calls to me? I will give my distance. I want to touch it. नहीं। It does. It's impressive. Yes. Show your reverence. What we have now is everything. Ira has blessed me. My great warrior is leading our army to victory. Can you imagine the pride I feel? Of course. Our champion will destroy our enemies before they even think to kneel. Mark my words. Damn, अच्छी बात है।
अबे तेरी ये कहाँ से टपक गया? एलेक्सूस भाई, कैसेंड्रा का भाई जिंदा, वो भी, और काफी ज्यादा गुस्से में भी है। अल्पिन और मरा हुआ, पता चल गया भाई इनको ट्रेटर यहाँ पे है। Elpinor is dead. One of you is a traitor. और ये रहा, मैं देख रहा हूँ शायद। The artifact will expose them. You! Damn. Everyone will be tested. You first. Go. Damn, अच्छी बात है। अब ये मेरे पास आया, अब आया के बाद मेरे भाई एलेक्स जो वो मैं ही होऊंगा शायद, You. मास्क वाला वो बंदा। Go. अब आ रहा है। You. मैं यूँ पसंद रही है यहाँ। सारे और शेट पकड़ा गया। एलेक्सस को और विजन दिखाया। Who are you? Go. बजाने दे रहा है। डैम, अच्छी बात है। ये अजीब था पर Get up here. इसको पता है कि मैं ही ट्रेडर हूँ, मैंने ही धोखा दिया है, पर ये साथ दे रहा है मेरा। एक और कार्ड मिल गया, अच्छी बात है। The traitor is dead. डैम भाई, खतरनाक है ये, काफी ज्यादा ताकतवर है जिससे सोचा था। और ये इनके फुट मतलब दुनिया भर में फैले हैं, मतलब भाई पूरे ग्रीक वर्ल्ड में ये फैले हुए हैं। कंट्रोल काफी ज्यादा पहले ही कर चुके हैं ये ग्रीक वर्ल्ड को। स्पार्टन ही है, कोई भी हो, अथेनियन, मुझे उन सब को मारना ही पड़ेगा अब, जो भी ट्रेडर निकलेगा। You're alive. मैं अपनी माँ के बारे में बोलूँगा। They know me. My family. They want my mother dead. I see. It's worse than I thought. There's more. They have a weapon. What kind? A soldier. Stronger and more ferocious than any I've ever seen. Herodotus. It's my brother. डैम, मतलब हमारा भाई We है। need to get to Athens. Athens. We need to find my mother. My clothes. Spear. Of course. My spear!
ओके आ गया सब कुछ मेरा। The cult of Cosmos called my brother Deimos. He used an artifact to see my memories. Cassandra, the man I serve, we must tell him what's happened before it's too late. You've heard the name Pericles before. Pericles is the king of the free people of Athens. King? Athens has no king. Pericles serves the people, not the other way around. Serves the people. You're right. He's not much of a king. Save your doubts. He is working to end this war. We all are. If there are forces colluding against him, he must be warned. We have to go. भाई देर हो सकती मैं बोलूँगा मुझे अपनी माँ के बारे में चिंता है और ये पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है। नहीं To Athens? They're hunting my family. My mother. I have to find her. You carry the blade of Leonidas. Act like it. If Pericles doesn't put an end to this war, we're all as good as dead. Including your mother. Fuck your war. The cultists are exterminating my family. You have a duty to the Greek world. We both do. Pericles must be warned. She is my mother. What would you have me do? If there is one place where we can find information about your mother, it is in Athens. How? Pericles surrounds himself with the brightest minds in Athens. Which is to say, anywhere. In Athens, you can fulfill your duty to your family. But before we can go, I need you to meet me at the Lion of Leonidas, at Thermopylae. Leonidas? Why? There's something I need to know. Something that may help us take down this cult and save your mother. You've proven I can trust you, but let's make it quick, Herodotus. First, Thermopylae. Then we go to Athens. Okay. I'll make sure every single one of these cultists dies by my hands. Okay, the Cult of Cosmos is a secret organization of the powerful people plotting to control the world. Six Blue are Greek. To unveil the identity of all members of cult and would and it once for all. Okay, मर्सनरी के बाजू में ही आ गया एक मेनू कल्ट का। ओके मैं अनवील कर सकता हूँ इनकी आइडेंटिटी पर अभी नहीं। थोड़ा सा सीखनी होगी आप लोगों को। इनके पास इंफॉर्मेशन जो होते कि मिस्टीरियस फ्रैगमेंट भी है तो इनका पता तो लगाना ही होगा मुझे। मैं दो को मार चुका हूँ, इसको भी मार दिया है। अभी ये मरा मतलब वहाँ अंदर ही फोर्ट में मार दिया खुद, मेरे भाई नहीं। एल्फिनोर को मैं नहीं मारा, गद्दार था भाई। अभी इसको मैं अनविल कर सकता हूँ पहले को। तो एल्फिनोर के बाद यही है। सोट्रा इज इन हर वेयर हाउस इन मेगर हाउस। मेगर इज रेडी टू अनविल। All clues have been gathered. Unveil Cultiver's location on the map. Cosmos demands to know the secrets hiding in the hearts of men, so I simply cut them open. अच्छी बात है। Please be a guy admit. Form of Zeros memories के ऊपर है। Form of Zeros clearly blah 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 blah. काफ़ी सारे ऐसा वॉरियर्स है। आई ऑफ कोस्मोस पहले मुझे अनकवर है द एसोसिएशन आई ऑफ कोस्मोस ब्रांच। मतलब 6 लोगों को मुझे करना होगा अनविल, अनकवर करना होगा कौन है वो।
आई ऑफ कॉस्मोस में। फिर अनकवर एंड एसोसिएट एंड और उसका आर्मर मिलेगा, इसका अलग अलग आर्मर्स होंगे भाई। और ये भाई पूरा वही है, 3 का आर्मर है भाई। ये ब्लड लाइन वाला है, सारे होंगे तो आई ऑफ कॉस्मोस लेवल 18, कोई बात नहीं। तो स्क्वाड्रन फ्लायर पर 1 सेकंड देना मुझे। भाई बाहर मस्त बारिश हो रही थी, अब थोड़ी सी विंडो खोल दी है मैंने, अच्छी सी हवा आएगी। तो देखो अब देखो मेरे पास अभी भी हमारे पास टाइम है, तो चलते हैं। ये 500 किलोमीटर दूरी है, मीटर दूर है यहाँ से। यहाँ पर है, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। हाँ, द लायन ऑफ वाली जगह, वो शेर बड़ा सा, यहाँ से मैं गया था एक बार, एक चीज़ के लिए, एक साइड मिशन के दौरान मैं गया था, गुजरा था। वहाँ ऊपर है, मैं एक साइड मिशन के दौरान गया था। Away we go. तो उसमें एक मर्सनरी को मारना था मुझे, इसलिए। Thermopyle. They say you can't walk this battlefield without getting blood on your toes. If you close your eyes, you can hear them. Their final war cries, before every last one of those brave Spartans perished. Their voices were silenced that day, but their story will be sung for an eternity. You didn't bring me here to talk about dead Spartans. What's on your mind, Herodotus? The Battle of Thermopylae still echoes in our hearts. But to stand here is to feel it in your bones. There's nothing here but ghosts. My concerns are with the living. Hold out your spear. My spear? What for? I need to know something. एक सेकेंड, ये चमकने क्यों लगा? अबे बबल क्लू दिखाया। किंग लियानोडस। अच्छा, स्पार्टन मर रहे सारे के सारे। Damn. Oh shit. ओके, ऐसे टूटा था एक स्पीयर और में। छूटा हुआ डैम, अच्छा है। अब ये कौन है और कहाँ से टपक गया? कौन है भाई ये? किंग सक्सेस पर्सन के साथ ही थी हमारी शायद। पहले वो मिशन किंग की सब पर्शियन के साथ ही। डैम, मर के भी मार दिया इन्होंने किंग जस्टिस को। शायद अगर ये वही हुए तो
एकदम ये ब्लेड मुझे ना असिस्टेंट क्रीड की याद दिलाती है। Herodotus! I'm fine. I'm fine. The stories are true. That is the spear of Leonidas. The hero's blade. Where were Sparta's allies? The Spartans weren't alone in facing Xerxes and his hordes. Many from across the Greek world were armed and ready to fight alongside Leonidas and his 300. But when the mighty king looked into their eyes and saw fear, he sent them home. That sounds like madness, not bravery. It was foretold by the Pythia that Sparta would lose either its freedom or its king to the Persians. Leonidas made his choice. What happened to Leonidas after the battle? Xerxes was famous for honoring warriors who fought valiantly against the Persians. But Leonidas infuriated him so much, he cut off his head and impaled it on a pike. A bloody battle ensued, and his remains were reclaimed by the Spartans and buried here. Now, however, he rests where he belongs. In Sparta. What happened to the traitor, Ephialtes? King Xerxes paid him well, but treachery breeds treachery. A contract was put on his head, and he died as he lived. A coward. ओके, तो पहले तो वहाँ पे हमने स्पीयर को जैसे ही हम यहाँ पे निकाला तभी वो ग्लो करने लगा। जैसे हेराडोस ने छुआ वैसे हमें उस रात की फाइट दिखाई जब किंग लियोनार्डोस लड़ रहे थे और उन्हें उस ट्रेटर के बारे में पता चला था लड़ने फाइट के बाद। तो हमने फाइट पहले एपिसोड में ही लड़ी थी स्टार्टिंग में गेम की। तो तब असलियत में हुआ था, वो उनको मारा कैसे पता चला किसी ने, उनके ग्रेटेस्ट विलन ने। पर भाई हमें फिर पता चला कि पूछा कैसेंड्रा ने कि वो लोग इतने कम क्यों थे और अकेले क्यों थे। पहले जब जक्सीस की तरफ फाइट कर रहे थे और उनके होड्स की तरफ, तब वो लोग 300 थे। तब वो पहले वो होड को मारने के बाद उन्होंने किंग लियोनार्डोस को उनकी आंखों में डर दिखा, इसलिए उन्होंने उन सबको घर भेज दिया। और नियति में भी यही था, पिथिया ने भी तब कहा था कि अगर हमें रहना है तो या तो हमारे राजा को मरना होगा या तो हमें सबको मरना होगा। यही नियति का खेल है। इसलिए किंग जक्सिस ने फिर पता चला कि किंग जक्सिस असलियत में मरने के बाद, किंग लियोनार्डोस के मरने के बाद उनके गला काट के उन्हें वहाँ पे एक जगह पे लटका के रख दिया। वैसे जक्सिस भाई काफ़ी फेमस है, ऑनरी के लिए जाने जाते हैं। पर जक्सिस ने किंग लियोनार्डोस ने जक्सिस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया था और काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, इसलिए तो उन्होंने उसके साथ गलती की और किया। और वो ट्रेडर था, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर आज़ाद भी कर, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दिए, उसको खुश भी किया, पर वो भी मर गया एक दिन। उसके ऊपर भी किसी ने काफ़ी ज़्यादा दाम रखे, उसके हेड के ऊपर प्राइस रखे, उसको मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दी और वो भी मर गया बेचारा, कावर्ड की मौत। और इसकी यहाँ पे क्यों ग्लो किया, इसका आंसर इसको पूछ रहा है मैं। You knew this would happen. I didn't know, but I did suspect. There is a place I convinced myself was a dream. Until now. A peculiar structure on the island of Andros. Mysterious shapes carved in stone. Like nothing I've ever seen. You want to sail to Andros so you can show me shapes? In my travels, I heard whispers of an ancient civilization. A people who came before. Your spear and that place are connected. Okay. तो एंड्रोस में कोई इनको मिस्ट्री स्ट्रक्चर दिखा है जो जिसका शेप अजीब है, और इनका मानना है कि वो एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब हमारे से पहले के जो लोग रहते थे यहाँ पे, स्पार्टन्स वगैरह, उन सबसे पहले जो लोग, उन्होंने वो बनाया मिस्ट्री स्ट्रक्चर। और इनको ये लगता है कि मेरा स्पीयर और वो स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखते हैं क्या है। You mentioned the people that came before. Who were they? They were not gods, but they lived far longer than any mortal, and were far more intelligent.
I've seen carvings in caves, strange symbols that suggest it was this ancient civilization that created humankind and provided them with fire. But Zeus blamed Prometheus. Yes. Well, perhaps his eagle has been feasting on the wrong liver. ओके तो वो लोग भाई मतलब गॉड्स नहीं थे एक तरह से, वो काफ़ी आम इंसान भी नहीं थे, इंसानों से ज़्यादा समझदार थे और ज़्यादा जिए भी थे, मतलब उनकी लाइफ The काफ़ी थी. spear awakened to you, Herodotus. I trust you. You understand? हाँ. I will do everything in my power to help you find your mother. I promise. But first, we must sail to the island of Andros. I'll meet you at my ship. ओके अब एंड्रोस जाना होगा मैं. तो आ गए शिप में भी. Welcome aboard the Adrestia, Herodotus. Will you be traveling with us? Only for a short trip. I have business to attend to in Athens. Herodotus is helping me find my mother. ओके मैप में एंड्रोस करके जगह इसलिए है, वहाँ पे चलते हैं. और हमने भी यही कहा कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ. ये रहा एंड्रोस. बिलीव करता हूँ क्योंकि भाई वो जो भी था पर काफ़ी काम की चीज़ थी, मतलब भी. डियर अगर तुम्हारे सुनने से मतलब सुनने से अगर You could be right. जागता है तो हो Herodotus and सकता I है. share enemies too. Like Elpinor? He was part of a very powerful group called the एक मैप में खोलो. एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे देखने दो. और डन. मैं पहुँच तो जाऊँगा. of Cosmos. Controls the free world through the Oracle. Control the Oracle? Impossible! Apollo would not allow that! Now they're looking for my mother. I need to find her before they do. And I believe they will hurt others who oppose their views along the way. By Hermes! The Oracle lost to corruption, and now this cult? Do we know who leads them? I don't know for sure, but I think it might be my brother. Why, Zeus, your life is complicated! Tell me, Lady. But don't you worry, this cult of Cosmos now has 3 new enemies, and one of them fights like Athena and shits thunder like Zeus! We'll bring the wrath of the gods down upon them! Is he always this positive? Always. That's why I like him. Poseidon, carry us to Athens! First, we need to go to Andros. To Andros, then! We're going to have to do some upgrades to my ship if we're sailing into war. What do you mean? Well, she's old, and perhaps not in the best condition. You couldn't have said this before we set sail? Where in Poseidon's name are we going to get the supply? My father taught me that the sea takes, and we must do the same. Fortunately, there are plenty of pirate ships in these waters that we can board and take from. What are we waiting for? Let's hunt some pirates! Ready to shoot! March! We're reloading! Onward! Well, Commander, we need to sail another day. Ready?
कितना चाहिए भाई इसके हल को? मुझे एक बार रिपेयर अपग्रेड एक्शन अवेलेबल एट दिस मोमेंट 400 चाहिए भाई नेक्स्ट के लिए। मेरे पास 92 ही है। There's much to do, and many unknowns. Archers to the front! Commander, we need to brace for Technia! Archers! We need you! Get them! Forward! Full power! Archers! Ready! We need to let the More Lord speed! rest, Commander! Let's go! Ready your bows! Out of sight, out of mind. Just smooth sailing ahead. Head for over water! इससे लड़ते भाई। Full speed, Commander! Prepare to board! Follow me! There she is! लेवल 19 भी ये अच्छी बात है। वो पीस तो है मेरे पास इसके ये मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट। मुझे लेना है कुछ दमदार, कुछ ताकतवर। देखो ओवर पावर अटैक या फिर ओवर पावर बूस्ट लाइक या फिर आर्चरी मास्टर एरो मास्टर ले सकता हूँ या आर्चरी मास्टर ही कर सकता हूँ। पर मैं कहता हूँ भाई हम यही लेते भाई ओवर पावर अटैक। प्रेस आर। Attention! Commander leaving the helm! There's much to do, many unknowns. हल्का छोड़ो भाई। We are ready to light them up, Commander! मिशन की ओर बढ़ो। हमारी क्विज मिशन में ये रहा। मैंने अपनी शिप अपग्रेड की है पहले और ज़रूरत पड़ेगी ऐसा ये लोग कह रहे हैं, गेम ही कह रही है। तो देखते हैं। पायरेट शिप में तबाह करते हुए चलता हूँ। Get the oars out! Arm Commander, they're yourselves! trying to ram us! Throw spears! Spears now! Now! Attack! Increase speed! Hit them with your spears! Here we go! We're getting in position! Increase speed! Let's move it! Use flame! Use! Arrows at the ready! Let's move! भाई फायर डैमेज Fast as we हल्का है। can! Onward! We are going as fast as we can, Increase Commander! speed! Salvage nearby! Finish! The commander's leaving the helm!
डैम क्या शिफ्ट है भाई। डैम क्या ये देख। इससे पहले इनकी शिप पूरी दफा हो जाए मैं ये ले लूँ। शिप गंदी हो गई है भाई। अब भाई मैं सीधा आप लोगों को वहीं पे मिलता हूँ, आइलैंड के बाहर ही मिलता हूँ आपको शिप पार करके, ठीक है। यहाँ बीच में समुद्र में इतना कुछ खास नहीं होगा तो मैं वहीं मिलता हूँ, बेस्ट होगा आपके लिए। और भाई नो डाउट मैं पहुँच चुका हूँ और काफ़ी जल्दी पहुँच चुके हैं। अब इनका कहना है कि भाई मिस्टीरियस स्ट्रक्चर कहाँ एक मिलेगा या नज़दीक में, ये क्वेश्चन मार्क मुझे दिख रहा है, उस साइड ही मुझे जाना चाहिए। तो चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। Here it is. ओके, वो क्वेश्चन मार्क भी शायद यही हो। भाई बोट चाहिए मुझे शिप को अपग्रेड करने के लिए। एक और डैम, एक भी तीर नहीं लगा है। भाई कितने तीर वेस्ट हो गए मेरे। मिलेंगे तो नहीं। ओ भाई ये देखो भाई, वो सब थोड़ा भाई खतरनाक Assassin's Creed का डूम। I've never seen anything like it before. इंटरैक्ट करते हैं। ये वैसे ही टूम्स है जैसे और Assassin's Creed में एक आध होता ही है। सीक्रेट प्लेस सबकी, जहाँ पे राज खुलते हैं।
ओके स्पीयर आया। एक और चीज दिखा रहा है स्पीयर मुझे, रिसेंट बचपन का। हाँ Who's स्पीयर there? फेंका। Come out! मदर Hesitation only hastens. The grave, I know, Mater. Your form is improving. Your resolve is strong, but you're not taking action. I was going to. I know, but it's the moments in between that decide everything. Your turn. ओके Leonida's spear. You're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. I felt something. Huh? The spear. It has magic. Carries with it a long line of power. A bloodline of incredible heroes. The same blood within you and me and our family. All of us? Think of Leonidas. He had great courage. And he made a great sacrifice. You share in his blood and the strength he possessed. We are able to feel certain things happening around us. That is our family's gift. But not everyone understands that. Some recognize the power we bear and want it only for themselves. They will try to take it from us. I won't let them. I know. You're a warrior. If we keep moving forward, always moving forward, we're untouchable. Storm is coming in. Then maybe we should move forward now. डैम, ये स्पीयर वे काफी ज्यादा मैजिकल चीजों से बना हुआ है और मैजिकल ताकत भी रखता है अपने अंदर। I haven't forgotten you. ओ भाई लगा ये था, ये स्पीयर ही चाबी है जिसको उनके अंदर घुसने की। पता आ गया एंशिएंट सिविलाइजेशन का नाम आए मतलब वो गई भाई। अब अंदर देखते By ही the gods! Who built all this? डैम काफी खतरनाक जगह है और तबाह हुई। और How does a place like this exist? सच में मुझे भी ये लगा, मतलब ये दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट भी रियल लाइफ में तो पता नहीं ऐसा कुछ मिला तो नहीं है ऐसा कुछ। ये एलियन टेक्नोलॉजी How टाइप could का I है। even explain this to someone like Marcos? ये वाला नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है ब्रोकन से नहीं है। आगे बढ़ते रहते हैं। एक रस भी अंदर नहीं आ सकता, अंदर आता हो तो मजा ही आ जाता। Something's glowing over there. एक्स बनी है यहाँ पे। डबल हैंडेड एक्स है यहाँ पे भी, वहाँ पे सिंगल हैंड है, डबल हैंडेड है। यहाँ पर This imprint is shaped like the sword Demos had at the cultists' meeting. Was it forged in this place? ओके ये वही स्वॉर्ड है जो डिमोस की थी, डिमोस के पास है। और लगती है शायद ये किस तरह का खोज है जहाँ पे वही होगी। और ये स्पीयर दिखा रहा है मेरा वाला, इंटरैक्ट करते हैं शिप वही, हाँ मेरे जैसा ही है। Forge activated. Synchronizing retransmission chronicity. Contact engaged. एम बोलता भी है भाई, इनको तो भाई पहली बार होगा, विश्वास नहीं हो रहा, मतलब बिलीव नहीं। ये टेक्नोलॉजी क्या, यू कैन रिफिल योर आर्मर पर बाय क्राफ्टिंग, रिफिल योर आर्मर। क्या ओके ये उठी अब वहाँ पे Demos!
The Forge. I knew I let you stay in the Animus too long. Your vitals are crashing. You don't understand. This confirms it. Cassandra didn't just have Isu technology. She had the means to improve it. Imagine how powerful the staff could be. I admit, that could be an incredible find. But right now, I'm the doctor, and I take care of you. Now get some rest before you go back to Cassandra. If you insist, but only because I've got work to do on the outside. Please, just clear your head. The last thing we need is a cell leader suffering from the bleeding effect and spearing us because we're Hittites or Thracians. I won't. But Thracians throw great parties. Don't forget, we're a team. We'll back you up until you're finished your investigation. I know. Kyoshi secured the loft yesterday and he's keeping an eye out. Elena's on call doing historical research. And I'm here to talk if you're feeling any confusion from the Animus. Always the therapist. So, Doctor, how do you feel now that we're closer than ever to the staff? I believe this staff is important. But the Templars and Assassins have found staves of Eden before. Nikolai Tesla blew one up in Russia, if I remember correctly. This is different. If what I saw in Egypt is true, this staff doesn't control minds. It controls physics, time. Imagine rewriting the rules of the universe. The spear you found is right here, and it's not doing anything. The spear's attached to a bloodline. Leonidas, Cassandra, and Alexios. They were intimately connected to it. Are you sure you can use the Staff of Hermes, then? No. But if the Templars get it, they won't stop until they find someone who can. Okay. So, what do you think of my new Animus? You mean our new Animus? That's Abstergo equipment. Which I've modified to within a millimeter of its digital life. It's an Animus console prototype, Raman variant, with the I/O capacities pushed to their max. Ultra-portable with more calculating power than NASA and CERN combined. I'll go stretch my legs. Too bad we don't have access to the Abstergo gym anymore, huh? Membership costs too much. Damn, काफी जगह है. Okay, एनिमल्स में ज़्यादा रहने से भाई माइंड ब्लो होता है और प्रॉब्लम हो सकती है. I wonder if the Fry twins would still recognize London. A rooftop's still a rooftop. सुनते हैं, बात करते हैं. How's it going out there? Well, no threats in view. I'm glad we could work together again. I believe our working methods are compatible. Are you still upset about our last run-in with Abstergo? I'm sorry, I didn't realize those hills in Quebec were so steep. But hey, you and your Yakuza reflexes saved us. Sorry, ex-Yakuza. We're all alive and our injuries have healed. That's what matters. Of course, I'll return to the Animus, then follow the trail Herodotus left to find the staff. But there's so many possibilities, so many choices. There's no way to know which ones are right. You used to run part of the Japanese Brotherhood. What would you do? Take things one step at a time, observe then act, or kill everyone and search their pockets for answers. You decide. Thanks for watching our backs, Kiyoshi. I'll leave you to your work. I'll report in if Abstergo drops by. Okay, ये इनके मिशंस की बात चल रही थी. तो मैं अभी इंटरैक्ट नहीं कर सकता आपके साथ. Looks third echelon. Or is it fourth? Too bad we had to leave before we could drink some more caribou. Sorry. Eagles are fine and all, but a pet monkey would be even cooler. ये वही है, पीबी का है. The center of the universe, circa 400 BCE. What? I should... ये लैपटॉप पे ऑडियो क्लिप्स देखते हैं. The lost book of Herodotus. The spear of Leonidas. If I didn't work for the assassins, I wouldn't believe it. I'm still not sure I believe it. But a little luck and a lot of research later, and we've got ourselves the archaeological find of the century. At least, we would if I could publish it. Okay, इतना ही था.
Rabi has contacted me. It sounds like we are in dire. डबल चेकिंग रे डबल चेकिंग भाई चीज़ें तो काफ़ी है मुझे लगता नहीं है भाई Hier soir, un cambriolage a eu lieu à la basilique. ओके इनकी चैटिंग चल रही है गेटिंग टीम टुगेदर मिशन कैंडिडेट एयरलाइन क्यूमेगिस एलेना रेन योशी टाकुरो विक्टोरिया बेबिया वो द इशू आर्क इशू आर्किटेक्ट ये उसी का है पर देखेंगे अब स्टोरी में और कैपिटलियन इशू ये वही एंशियंट लोग हैं जो ज़्यादा जीते थे भाई और हेरमीज का जो ये स्पीयर शायद लोग ढूंढ रहे हैं और एलेथिया एनिमल्स जानते ही है हेराडोस एंड हिज वर्क स्पीयर ऑफ लियोनार्डोस Ten religion artifact with supernatural powers. Channeling top 10. Miraculous. Just how real are they? Relic Saints top 10. Bob funny and fail completion. First full video. Check out my channel. Hier soir. My email. Fascinating. Layla, can you believe we're meeting Herodotus himself? I can. Herodotus? He sure does talk a lot. Is there anything I can help you with? So I've met Herodotus, but I don't know much about him. He's brilliant. His histories are considered the foremost textbook of classical Greece. People have made their careers analyzing his words for some new perspective. To see him in his own world, walking in the polis, and... Sorry, but he's kind of a hero of mine. You can fangirl all you want. Yay! So does what I'm seeing as Cassandra match your research? I had to tweak the animus to use what we have of the book as reference. That book is a lost work by Herodotus. He basically invented the concept of recording history. And other figures are matching up too. Cleon, Pericles. The chance to see the past firsthand is why I joined the Assassins. Most people would talk about justice or leaping across rooftops, but history's cool too. I've loved history since my grandpa told me stories about his grandpa back in Ireland. He was an adventurer and sailor. So I'm continuing the family tradition. I feel so lucky. You make your own luck, remember? Why do people keep telling me that? I'll leave you to your work. If you need anything, just let me know. हाँ देखेंगे पब चलते भाई मेरा दोस्त की बुक से लिए है और वो भी एनिमस द्वारा चेक कर रहे हैं और फाइनली अब मेरा दोस्त को और चीज़ें मिलेंगे देखेंगे. Are you sure you want to go back into the Animus right now? I get the impression you'll be there a long time. Yes, I want to return to the Yes, I'm ready to go back to Cassandra. All right. I'll be watching your back. अब तो जाना ही होगा मतलब चेक करना ही होगा ये क्या कर रहा है वो कोड में वगैरह सब. ये चेंज हो गया डिजाइन अलग हो गई है. हाँ इसका हैंडल जो टूटा हुआ था वो अपग्रेड हो गया है.
My spear is stronger now. The cult won't stand a chance. Spear upgrade आ चुके हैं. Upgrade the spear of Leonidas. Here are the forge of Hypothesis using artifact fragment. Upgrade it, increase the deadline and unlock more powerful abilities. Okay. Here second melee ability will unlock next level पे मैं ले जाऊंगा तब मेरे पास दूसरा फ्रैगमेंट होगा अभी तो एक ही है ये वॉइस वर्ड है जो मुझे पास है मेरे पास स्पीयर है जो मुझे ताकत देता है और स्वॉर्ड है उस एलेक्सियोस के पास तो उसे ताकत दे रही है अगर मतलब वो इस जगह को जानता है तो बाकी चीज़ें भी जानता ही होगा यहाँ कैसे आया एक बहुत बड़ी है वो है हायर लेवल की इतनी अच्छी नहीं है चलो एक ही बचा है मेरे पास फ्रैगमेंट टेक्नोलॉजी ओके वो काम का नहीं है मैंने एक इस्तेमाल कर लिया बाकियों का इस्तेमाल मैं करूँगा वैसे ही मुझे पास दिखाएगा और अपनी Well, Herodotus will be happy. It's clear someone was here far before we were. हाँ इससे यही लगता है कि हमारा से पहले भी कोई आ चुका है इस जगह में अंदर बट ऑफ कोर्स शायद आए हो पर हिराडो मतलब एलेक्सियोस जो है उसे तलवार भी यहाँ से मिले है शायद अपनी तलवार तो उसे यहाँ से ही मिली है बोर्ड में डिज़ाइन एकदम वैसी है तो मतलब बनी हुई यहाँ पे हेरो अबे एलेक्सियोस आ गया भाई मेरी एलेक्सियोस भी और कैसा दोनों ही एक जैसे ही है You're not hard to track. Did you come alone? Are you all right? Alexios, you're alive. Don't touch me. Come on, little brother. You have to tell me everything. What's happened to you? I don't have to tell you anything. I don't know you. Well, I know you. It doesn't matter. There's more important things to argue about. You're right. Like that stunt you pulled with the artifact. It got my attention, if that's what you wanted. What? The artifact showed the truth. We're family. And we made it out of Sparta alive. Yes, it did show the truth. It confirmed what I always knew. You threw me off a fucking mountain! या मैं इसे कहूँ ये गलत है या तो I can explain everything. If that's what you think, Alexios, you must have hit your head on the way down. I've heard this story, and not from a liar like you. And never call me Alexios. Right. Demos. Now him, I don't know. He's a demigod, worshipped and feared by the cult and all the Greek world. Sounds like a fantasy to me. Did the cult cook that story up too? I'd watch your fucking mouth, or I'll shut it for you. You didn't when you had the chance before, and I bet you won't now. This is stupid. We need to find our mother. I'm not interested in reunion. I just want to know what you think you're doing. Same thing as your cult. Looking for Myrine, our mother. They don't need her. Your cultists think differently. She's their next target. If they ever pursued her, it would be to kill her. But if you don't know where she is, that means she abandoned you too. How sad. Even if we were abandoned, we survived. We can go back to the way things were if we can find her. The cult has no interest in sentimentality or family. Its only aim is control. नहीं इसको मैं
मैं ये बोलता हूँ बैलेंस करना है. If they're after all of us, there's one less person to find. I killed Nikolaos. Yet here you are, acting so righteous, when really, you're just like me. I don't care what you think. I'll find Myrini. Do the right thing. Come with me. What? We could find her. Together. You could help me. Oh, you think friendship is the answer? Running around like lost children looking for dear mater. You're so weak. Don't call me weak, or I am not weakness. I am not a weakness. Weak? I've had to kill for much longer than you've had to. Oh, I'm so scared. I have an army behind me. One false move, and you're obliterated. That's the plan. Taking your own mother isn't enough for them? We're not abductors. We're political. Those who don't stand with us stand against us, and they pay for that mistake. Like me. Like you. I heard you're planning a trip to Athens. When you go, tell Pericles and his elitist scum they're next. The cult let Myrini live. They let Nikolaos live. Why kill them now? Because you live. You brought this on her and yourself. The cult is powerful, but they're mortals. I have the blood of gods, so they think you do too. But they'll see how wrong they are. I'm going after the cult, you know. You've seen our numbers. You've seen what I can do. And you still think you stand a chance? Try me. So having guts runs in the family, does it? You claim we have the same blood. So let's see what you can do. Not before I hurt you, you are still my brother. मैं कहूँगा ठीक है. लड़ाई नहीं. मैं इसको भाई मतलब भाई हमारा एलेक्सियोस तो इसको अपनी साइड करेंगे भाई. लड़ाई नहीं. 0% लड़ाई होगी भाई इसके साथ. We still found each other, brother. I told you not to touch me. भाई थप्पड़ मार दिया मेरे को. Demos! Okay, अब समझ में. Malaka. Herodotus won't believe this. I have to tell him what happened. हेरोडोटस भाई मदद कर देता है पर नहीं. पता नहीं होगा यहाँ पे आया था. ये जगह क्या है? 1 2 3 4 और 5 हो चुकी है मेरे पास. मतलब स्टेमिना तो काफी काम आएंगे भाई ये रहा बात. Well, was the legend true? Was it magnificent? What happened to you? And your spear? Slow down, Herodotus. My spear's stronger now. I can feel it. You were right. There was some kind of artifact there. It showed me a vision. Of me and my mother. So, the ancient civilization is real. Cassandra, you have no idea the power you possess. All harnessed in Leonidas' spear. That's not everything. Demos followed me here. The cult's already moving, he told me himself. They're going after us. My family, Pericles. Why would he tell you? Unless it was a trap. It doesn't matter. We have to get to Athens to warn Pericles. And we need to find my mother before they do. Then, we go to the Pnyx. If Pericles is anywhere, he's there. Okay. तो भाई डैम ये पेरिक्लीस के पीछे पड़े हैं. अथेंस के सम्राट वो भी है जो उनकी हेल्प करते हैं अथेनियंस की. जो भी है उनकी तो उनके पीछे है. तो डैम उन्हें बचाना ही होगा. तो हम नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम पक्का वहीं जा रहे हैं. आज नहीं हम सीधा अथेंस के पास जा रहे हैं. और नियर बाय डैम ताकतवर बन चुका है. तो अब मुझे समझ में आया कि कल्टिस को मुझे डाउन शुरू करना था. तो कल्टिस को देखो भाई, कल्टिस को डाउन करने का बेटर ऑप्शन एक ही मात्र
चीज़ है कि ये मुझे आर्टिफैक्ट चाहिए, इससे मेरा स्पीयर अपग्रेड होगा। और क्विज़ भी आ चुकी है उसकी। शायद ये सुनने में अच्छा नहीं होगा, पर हाँ, वेलकम टू अथीना, रीच टू आइटिका एंड कलेक्ट आर्टिमेट फ्रेगमेंट। मुझे कुछ 2 और आर्टिमेट फ्रेगमेंट्स चाहिए ताकि मैं अपग्रेड कर सकूँ अपने स्पीयर को। और तो वो चीज़ें हम करेंगे। वेलकम टू अथीना, और इसका भी देखेंगे, कल्ट ऑफ कोस्मोस को भी मारेंगे, पर पहले मुझे वार्न करना होगा पेरिक्लीस। तो अब हम सीधे नेक्स्ट एपिसोड में वहीं जाएंगे, पेरिक्लीस को वार्न करेंगे कि भाई प्रॉब्लम आ रही है वगैरह। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पर आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। पहले ही एपिसोड काफ़ी बड़ा हो चुका है इसलिए। और भाई प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और भाई एक बार लाइक कर देना। हमारा स्पीयर अपग्रेड हो चुका है और इसके साथ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ वगैरह आ चुकी है। तो अब हमें चाहिए, अब बेटर चीज़ें हमें और चाहिए होगी, तो हम वो ही लेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्राई करेंगे अब जितना हो सके। लेवल 19 हुआ है और 20 होने ही वाला है, तो नेक्स्ट एपिसोड में लेवल 20 हो जाएगा मेरा। उसके बाद हम एथेंस में और चीज़ें कर पाएंगे। और एक और चीज़ भी मुझे एथेंस में करनी थी, हमें वो ट्रैवल आप लोगों को याद होगा, पर्शिया से भाई बंदा आया था घूमने के लिए, तो उसका भी एथेंस में ही एक जगह है, मुझे ढूंढनी होगी, वो भी ढूंढेंगे। और तो सोटेरा, ये रही इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊँ। स्लेटरिंग बेल्ट लेजेंडरी वेस्ट है भाई, इसको मार्क करना है और मारना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम पेट्रिकिया मतलब एथेंस के पास जाएंगे, एथीना में उन सभी को वार्न करने के लिए। पहला तो पेरिक्लीस है, तो उसे ही वार्न करेंगे यहाँ पे एटिका में, और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एटिका जा रहे हैं भाई। ये दिखने में भाई, मानने में तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मेरा लेवल 19 है। तो यहाँ पे मुझे एक लेजेंडरी स्पीयर जो बैर के साथ आता है, और इसका एसिस्टेंट डैमेज है, सिर्फ एक असिस्टेंट ही मार सकता है इसके ऊपर। बाउंटी ऑन अ मर्सनरी, वो भी एक ऐसा ही बंदा है भाई, मीन कोई है। और भी ख़तरनाक मिशन है जो मुझे करने हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में बढ़ेंगे। और हमारी एक डियर ओल्ड फ्रेंड जो यहाँ पे रहती है ओडिशा, उसके लिए भी हमें उसके हब्स वगैरह लाने हैं, तो मैं लेके आऊँगा सब कुछ। तो थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट एपिसोड के में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना कि भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये गेम कैसी है, और इसके बारे में और क्या आप लोगों को अच्छा लगा। सो भाई एक बार प्लीज़ ये चीज़ें मुझे बता देना प्लीज़। एंड बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।